और जुल्म ज़्यादती से मना करता है, वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुमने उससे कोई अहद बांधा हो, और अपनी कस्में पुख्ता करने के बाद तोड़ न डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। अल्लाह तुम्हारे तमाम अफ़आल से बाखबर है। तुम्हारी हालत उस औरत जैसी न हो जाए जिसने खुद अपनी मेहनत से सूत काटा और फिर खुद ही उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलात में मक्र फरेब का हथियार बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फ़ायदे हासिल करे, हालांकि अल्लाह इस आहद व पैमान के ज़रिए से तुमको आजमाइश में डालता है, और वो ज़रूर क़यामत के रोज़ तुम्हारे तमाम इख्तिलाफ़ात की हकीकत तुम पर खोल देगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah, Maulana Athar Saab. So we carry forward this program, and this session will be chaired by Professor Zadam Khan. He is the Secretary General IOS and does not need any introduction. And we have the panelists, Advocate Tariq Siddiqui, a very prominent advocate in High Court of Delhi, and Dr. M.D. Thomas, a very good human rights activist and initiator of peace processes. And we have with us a very reputed journalist, Prashant Tandonji. And we have also Major Zahid Hussain from Chennai with us, and we'll go with the program. And to begin with, I may again mention one thing, that the Declaration on Minority Rights, which was adopted, that is not basically creating any special rights for minorities. That was for effective implementation of human rights for minorities. That means the main philosophy is human rights, main agenda is human rights, and there are circumstances where human rights of particular groups of people or a particular person are not respected. And therefore, this declaration is an assertion of the fact that this should not happen, and therefore special attention should be given towards the effective implementation of the human rights of these persons, and one of the categories is minorities. And that's how we know that anybody can be in minority anywhere, in any context, in any perspective. So in any situation, the human rights of the person must be respected. And that's basically the celebration of it. Cannot be that something good has been done so far and the humanity needs to be complacent and happy on it and have a happy celebration. No, we may be happy, okay, this has been realized and this declaration has been made. All right. But at the same time, when I look to things maybe in the later part, just the 2000 years before, from the days of crucifixion of Jesus, and what happened then and after that, and Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and then Magna Carta, American War of Independence, and American Bill of Rights adoption, and then French Revolution, and English Bill of Rights, still two big world wars, genocide, everything. And then you resorted to UN Charter, had a very good aimed body like United Nations, and then Universal Declaration of Human Rights, and what then? And it's very difficult to see if any human being is secure in any corner of the world, complacent and happy. And if all good fragrance and good light is coming from every corner, no, that's a question. So that's a threat. Threat is from any economic angle, not only from the weapon, but we now talk a lot about food safety. We talk of
safety from different kinds of man-made disasters and like that. So that's the situation, then definitely a minor is more vulnerable, and therefore some justification for having, some kind of celebration on it, because it has been focused. But at the same time, I think the true celebration can be only in the form of appreciating the problems, appreciating the issues, and then initiating the programs, initiating the action, so that we attain the objectives of the human rights of human beings, including anybody who is anytime different than others, maybe because of religion, race, color, faith, or any gender, or anything like that. So that has to be, and that being the context of it, I think as is given in this list, I may then first, with the permission of the chair, I request Advocate Tariq Siddiqui. So can you please give us your views on the occasion, as they have taken this topic of minorities in India, issues and remedies on this Minority Day, which is being celebrated. Advocate Tariq Siddiqui, over to you. Assalamu alaikum and good afternoon, good evening. So today's topic is minorities in India, issues and remedies. Today is also a minority day, minority rights day. So since today is minority rights day and it is celebrated all over the world, so we I feel that we should start to understand what is the meaning of minority. And since right is there, duties are also there. So that word duty is missing. So if minority has a right, they must be having a duties also. So we will, during our discussions, we will take care of that part also. So how the United Nations think what is minority, how it defines, how it discusses in its various conventions. So they say, the United Nations in their various conventions, they say it refers minority as based on a nation. Minorities are a group based on nation, ethnic, culture, religion, linguistic identities. These are the major criteria on the basis of which minorities are determined, they are identified. Professor Vani has rightly said that the purpose of identifying minorities is not to grant them various privileges, but to see to them that they are also getting all the privileges which other section of the society of that country is getting. Why the United Nations emphasize that the minorities declaration is devoted to nations, ethnic, religious and linguistic minorities, is that the sense of insecurity is there in the minds of minority everywhere. And what is that sense of security, insecurity? Because the topic is also the issues and difficulties faced by the minorities in India. It is not only in India, all over the world, there are certain issues, there are certain difficulties which are faced by the minorities community of that particular country. The major issues and difficulties faced by the minority community of any country is their education, their social structure, social condition, economic structure, economic condition, the freedom to use their religion, and their political affiliation, involvement, etc. The Constitution of India has taken care about these things. This is why in Article 25 we have right to freedom of religion. In Article 29 we have
cultural and educational rights. And in India, we have Ministry of Minority Affairs, we have Minority Commission, we have a very special commission for minority education institutions, which take care of the educational right of the minorities. So these are the basic backgrounds relating to the issues faced by the minority communities in India. So now when we come to India, who are minorities? In India, about 90% of the population of India is minority. And the declared minority in India are Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and Jainists. They are called Parthis also. And very recently, in the year 2014, Jain community has also been notified as a minority community. UN declares various days as specific days, like National Population Control Days, Navy Day, International Civil Aviation Day, Human Rights Day, very various days. December is full of celebration of days. Today is Minority Rights Day. Today is also Migrant Days. I am emphasizing, although my discussion is on minorities, but to show the plight of minorities and to relate them, we can see what has during the COVID times, the conditions migrant have faced. So there is no formal body to take care of their condition during that COVID time. But for minorities, there are various organizations and educational setups also. And NCMI has done tremendous work, National Commission for Minority Education Institution, which was specifically set up by the Government of India in the year 2010 to take care of the minority setup of the country and for the upliftment of educational rights of the minorities. So major issues, this is why the major issues I have focused, and since this is a discussion, I give the opportunity to the other speakers to start with, so as in between we can discuss other issues also. वानी साहब, तो वानी साहब शायद किसी ज़रूरत से इस वक्त हैं तो लाइन पर, लेकिन तो मैं नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर MD Thomas. Just Mansoor Saab. Okay. Welcome. Yes. Okay. We do have with us, very reputed this contributor to humanity, Dr. MD Thomas, and he is the president of one of the peace foundations, and he has been with iOS multiple times and is a well-wisher, and he's a very good human being also. And I can say that he is a good author, he is a good organizer, and he is contributing to thought presently also through a channel as well. And on different occasions, he is giving advices and good anecdotes to the people. So we welcome him to the program, and I would like that he gives his wise words on the occasion. So over to you, Dr. MD Thomas. Respected Chair and other speakers of the day and friends.
It is Minority Rights Day. And this great event is a very timely one and a very relevant one. And I compliment Institute of Objective Studies for making this possible and also for having me here today. When we say minority, on the other side of the coin, there's another word called a majority. And when we say minority rights, on the other side, there is majority duties. They go hand in hand. To simplify the word, it's minor and major. In the context of age, minor becomes a major after some time. But in the context of number, not necessary that a minor becomes a major. Can also. And a minor some area can be major elsewhere, and a major elsewhere can be a minor this side. All the same, in the second case, minority and majority, in majority, there is simple majority, the highest number, and absolute majority, 50 plus. Whatever be, in majority-minority equation, number is the point in question. Democracy also is a play of the numbers. And number is, in fact, a big thing, very important one. At the same time, number is not everything. Giving too much importance to number sometimes spoils the soup, the fun of life, so to say. Therefore, a balance has to be maintained between the minor and major wherever they are, between the majority and the minorities. Only then I think we get the life, make the best of our life in the world. Number, while being important, it shouldn't carry the life away from the point. Saying so much about by way of introduction, the first word, minorities, in our title, minorities, and the second part is minorities in India. India, we know, it's a great country. We are all part of that great country. Great in several ways, there's no doubt. It has diverse social, cultural, religious, ethnic characteristics. And it's a land of diversities. Maybe the highest number of diversities, maybe. But then, to be frank, maybe we are yet to become mature enough to live with diversities, to make the best of the diversities. We also know, to be very frank, the mainstream tradition of the country. I'm not speaking about a particular community or a particular stream, but in general, the mainstream of the tradition of the country, there is a lot of discrimination and division also in terms of language, religion, caste, culture, and the like. We have a constitution that has some of the best values of the world here, no doubt. But by way of living those values, maybe we are more or less. At times we are out of the track too. We have plenty of beautiful ideals,
But somehow many of those ideas do not come down to our day-to-day life. That's something to be regretted. Minority, majority concerns are there. Tharoor once gave a lecture on this, saying that India is a land of minorities. Anyway, on the whole, there is majority, minority concerns. And because of that, there is imbalance also, little treading on the feet of the other now and then in the diverse ways, because of maybe certain immature ways also, let us say, or we are yet to learn how to live life harmoniously with one another. I would like to highlight three things here by way of the second half of our title, Minorities in India, Issues and Remedies. The first thing is there's a confusion about difference. Difference is the best part of life. The Creator has put that difference, and that is the wisdom of the Creator. But for the difference, we would have been bored in life. But then often there's a lot of confusion about this wisdom, with this difference. Difference is understood off and on as a negative factor. It's not a negative factor, it's a positive element in life. Difference is a source of enrichment. Difference is the source of creation too, like male and female. But at the same time, this difference is, is difficult to be accommodated with. At times I can't the difference in the other individual, the other community, the other group, the other language, the other religion, the other creed, caste, and the like. So I at times try to do away with the difference or eliminate even. That's the problem about. There's a confusion about. But difference is like a mirror. As if I'm looking at the mirror, the other tradition, the other set of values, the other community is like a mirror for me to check my human and spiritual fitness. How fit I am as a human being, that mirror will help us. But at the same time, there is this confusion. So I think in order to maintain the balance between the majority and minority wherever, major and minor wherever, I think we need to engage with the difference in the other, by way of creed, by way of caste, class, religion, ideology, culture, whatever. Engage with the difference. Learn from the other. Unlearn a lot of things we have learned. Even the way we have conceived God, the way we have conceived male and female, the way we have conceived life, we need to unlearn a lot of things and then relearn. That's the process of learning. That's knowledge. That is spiritual pursuit. I think we need to go into that process. I think overall the society is like one body with many parts. Different parts of the body are different. They have to be different. Hand is not leg. Leg is not hand. Heart is not head. Head is not heart. Eye is not ears. Ears are not eyes. They have to be different. But together they are one body. Each one has its own dignity, its own role, and they have to work together. So this confusion about difference has to be overcome. That's the problem with minorities and majorities, different communities.
So what I mean to say is unity in diversity is a very good slogan. For that unity to be built up, I think that to celebrate the diversities, we need to recognize the difference in the other and welcome it as a positive quality of enrichment. Learn from each other and to live with each other. And then only I think this issue of confusion about the difference has to be overcome, and that overcoming is the remedy for that. I think that is the basic thing with regard to this settling or going beyond the difficulties, imbalance between minorities and majorities. Secondly, there's a communal mindset. Well, Justice Markande Kadju once said that some 80% of the leading communities are communal, he said. Well, percentage may be more or less, but this communal mindset is there. The way I have understood God, the way I have understood male, female, the way I have understood my own culture, the way I conduct myself, it becomes sometimes too communal. It's like a frog in the well, as if we are in an island or in a lake. There's no flow, and we get a bit caught up. This is fundamentalism. This is fanaticism, whoever be. And this can be wherever, if this is there, there's a closed circuit. I'm okay, the other is not okay. Because of this communal mindset, I'm not able to accommodate with the other community, majority or minority. And when there is number is higher, of course, we know that it becomes more difficult. Whatever be, this is the problem, a psychological problem, so to say. There's a poet, a shair, Bashir Badr. उनका ये दो पंक्तियां हैं, खुदा हमें ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमें ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे. Communal mindset is this, that nothing appears to us except me, my family, my language, my creed, my community, my tradition, my, all that. Because of that, we are not able to accommodate with the other. Well, the remedy to this problem, psychological problem, religious problem, linguistic problem, community problem, is to have an inclusive thinking. To think we are in a globalized world, but a global outlook is not there. When the nationality is considered as a cut-off nationalism, it offends. It's not a nationalism, it's not for a particular community also, a particular language, particular religion. It's inclusive. The country, nation is an inclusive concept. The society is an inclusive concept, and the global outlook is needed, and an inclusive attitude. And we need to develop multi-community relations, small and big, major and minor, multi-community relations. I think that is the good sense required. And this good sense will help us, I think, to settle the majority-minority equation. And whoever be the violating, whoever be the violating, So that's a deficit of ethics. This deficit of ethics is the violation. okay, that was आवाज आ रही है, उनने फिनिश किया या क्या आवाज नहीं आ रही थी. हमारी आवाज नहीं आ रही है. अब आ रही है. अब आ रही है फिर से. हाँ, अच्छा. Great. Yeah, I was coming to the third point and the last point. The third issue is the deficit of ethics. This deficit of ethics is in terms of the individual person or individual community. It can be selfishness.
self-centered thinking. And too much self-centeredness is maybe in another way to say is I am intelligent for myself, but foolish for the society, foolish for the other. So that is a self-centered mindset, because of which, is a violation of ethics. As an individual, as a person, it's a violation of the ethics. I am as an individual, there is other individuals, other communities, and I am violating the other when I am centering myself. The center should be between us, between me and the other, my community and the other, and my nation and the other. So what I mean to say is, this deficit of ethics in the individual context develops into the other areas, and there violation of rights and duties takes place. When I have a right, the other has to perform his or her duty, and when the other will get the rights and rights when I perform my duty. And in this deficit of ethics, a major element, agency that can help us is the religious sector. To be very frank, engaging with all religions, my religion and all religions, to be very frankly and humbly to admit, religion to many times, I think religion is part of the problem than of the solution. Religion has a lot of engagement with the religion is taking place. Time is given, pious instructions, pious devotions, and pilgrimages, all that. But for life, and I think less fruit is coming forth. That is why this violation of rights takes place. From major or from minor, violation of rights takes place. Difficulty to accommodate with each other is a violation of the ethics. It's because the religion is not helping us enough. Lot of performances of religion is there. What I mean, it is not producing ethical values in life. And that, I think, focus on the ethical values will be a remedy to rectify this equation between minority-majority concerns. Well, another aspect is has to be leader. The leader is थॉमस साहब आपका नेट ठीक काम नहीं कर रहा है. हेलो, आपका नेट ठीक काम नहीं कर रहा है, तो वीडियो भी रुक रहा है, आवाज भी कट रही है. Am I audible? And now it's okay. हाँ, ओके जी, ओके, कंटिन्यू. ओके, प्लीज कंटिन्यू. Okay. So what I mean to say is the leadership is one who takes everyone along and maintains the balance among communities, among individuals, and the rights and duties and the like. When that doesn't take place, it comes back to the governance aspect. So therefore, ultimately, what is to be done in maintaining the equation between majority-minority elements, I think the golden rule would be treat the other the way you like to be treated. Do to the other what you wish the other do to you. I think that will help us to strengthen the ethical fiber required for maintaining rights and duties among minorities and majorities, among different communities and different nations. I think this is what I would like to say. The minority rights in India, issues and remedies, the engaging with the differences and inclusive thinking, and at the same time strengthening the ethical fiber, by which I think we will be able to settle the issues very much in this line. Thank you very much. Thank you. Very good. And we are grateful to you for your ideas. And I believe that as Advocate Tariq, he talked of issues of security and then law, and then Thomas G, he added a very good dimension
that even if we have the law, then the mind should appreciate the difference. Difference is important, difference is indispensable, and difference is very good if you appreciate it. And then one must prevent any factor, communal self-centeredness, or any other kind of factor come in between the human feelings of difference, and then that is blinding a person, because once you get communal or self-centered, you don't understand the difference in the real context. That's the main problem. So we are grateful to you for that. Now I invite Shri Prashant Tandonji. He is a reputed journalist, and today's world is shaped by the media, and minds are shaped, and minds are also, in a way distorted by media. But what I would say is that media is important. Whatever is happening, there is always good and bad working together. So on this day, when we talk of the rights of minorities and issues and remedies about minorities in India, we would like that Prashant ji is giving his words of wisdom on the basis of his experience and otherwise. So Prashant ji, kindly over to you. Thank you, thank you. I hope I am audible to everybody. Yes. And if this is not going to international Yeah, audience, you are audible. may I seek the permission of Chair to speak in Hindustani instead of Sure, sure. Yeah, Sure. I was worried that Dr. Thomas couldn't understand, but now I discovered that he is fond of Urdu poetry. He reads Bashir Badr. So so I switch over to Hindustani rather than speaking in English. मैं अपना जो थोड़ा सा वक्त आप लोगों का, मैंने दोनों स्पीकर्स को बहुत गौर से सुना और मैं उतना एकेडमिक नहीं बोल पाऊंगा, तो मैं मोटी मोटी 2-3 बातें रखना चाहता हूँ, एंड आई विल बी लेस एकेडमिक इन माय प्रेजेंटेशन. और पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो माइनॉरिटी राइट्स डे है, इसको अगले साल से हम एक वेबिनार और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और ये सारी चीज़ों के अलावा, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, लेकिन हम उसको सेलिब्रेट भी करें. और माइनॉरिटीज़ ने इस मुल्क को और पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है. कहीं की भी माइनॉरिटीज़ हो, तमाम तरीके का खाना पीना, पकवान, कल्चर, लिटरेचर, पहनावे, और इन सब को सेलिब्रेट करना चाहिए. हमारे देश में माइनॉरिटीज ने जो कंट्रीब्यूट किया वो बहुत रिच है, और उसके बगैर हमारी जो कल्चर है उसका वजूद ही नहीं है. मैं अपनी बात तीन इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे या 3 इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स पे फोकस करना चाहता हूँ. एक सवाल है रिप्रेजेंटेशन का, और दूसरा है डिग्निटी, और तीसरा जस्टिस. और इन 3 के इर्द गिर्द मैं माइनॉरिटी और रेस्ट ऑफ सोसाइटी, माइनॉरिटी एंड स्टेट, माइनॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, इसको मैं समझना चाहता हूं आप लोगों के साथ. सबसे पहला सवाल रिप्रेजेंटेशन का है. रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेकार हैं, बेमानी है, उसका कोई लेना देना नहीं है. क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन हम नहीं दे पा रहे हैं माइनॉरिटीज को, तो फिर हम बाकी जो जस्टिस और डिग्निटी है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता. और हमारे देश में रिप्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है. मैं अगर मुस्लिम्स की बात करूं तो 3% भी रिप्रेजेंटेशन जो है सिविल सर्विसेज में मुस्लिम्स का नहीं है. जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं वहाँ पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है. क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेशन फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ
साल तक था बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल, लेकिन धीमे धीमे वो बहुत कम होता चला गया। जबकि क्रिश्चियंस का दो बड़े, हमारे जो नेशन बिल्डिंग के दो बड़े पिलर्स हैं, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन और हेल्थ केयर। जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, जब स्टेट के पास पैसा नहीं था, तब ये क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस ने इन दोनों पिलर्स को खड़ा किया और उसको संभाला। मुस्लिम माइनॉरिटीज को आप देखिए तो पंडित ने, सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करता हूं क्योंकि सीट ऑफ जस्टिस है, और सीट ऑफ जस्टिस में अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वहां से जस्टिस की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बहुत फ्रैंक बात मैं साफ साफ कर रहा हूं इस बार। पंडित नेहरू 1950 में चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई माइनॉरिटी से बने। उन्होंने वो कोशिश की, उन्होंने मोहम्मद अली करीम छागला को, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उनको लाने की। पंडित नेहरू कामयाब नहीं हुए और भारत को पहला मुस्लिम चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह के रूप में 1968 में मिला। अब तक कुल मिला के 3 चीफ जस्टिस हुए हैं मुस्लिम। आज सिर्फ एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, 34 जजेस में सिर्फ एक मुस्लिम जज हैं। क्रिश्चियन का मेरे ख्याल से एक भी नहीं है, या मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो वो उसकी परसेंटेज आती है जी 2.9%। तो ब्यूरोक्रेसी में 3%, सुप्रीम कोर्ट में 3%, 3% से भी कम। इस तरीके से अगर आप बाकी इंस्टीट्यूशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लगातार जो माइनॉरिटीज के सदस्य हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। आप नंबर ऑफ वाइस चांसलर देखिए, नंबर ऑफ प्रोफेसर्स देखिए, किसी भी मीडिया का में आप देख लीजिए, मीडिया में 90 to 95% जो सीनियर लेवल पे पोजीशंस हैं वो केवल हिंदू नहीं, वो हिंदू अपर कास्ट हिंदूज है। वहां पे जो दलित ओबीसी नहीं है, मुस्लिम क्रिश्चियन तो बड़ी बात है। और एक जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी जिसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, वो हमारी जेंडर माइनॉरिटी है, विमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब रिप्रेजेंटेशन से सवाल जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं, वो पैदा होते हैं जी डिग्निटी का, जस्टिस का। डिग्निटी की जहां तक मैं बात करूं, हमने माइनॉरिटीज के साथ बहुत खराब व्यवहार किया है, समाजी तौर पे, सरकारों के द्वारा, हमारे पुलिस फोर्सेस के द्वारा, हमारी अदालतों के द्वारा। और इसमें मुझे कहने में कोई, अगर मैं ये कहूँगा कि जी बड़ा ऑनरेबल ट्रीटमेंट किया, तो मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँगा। अभी आप देख लीजिए कि कुछ ही महीने पहले की बात है, बाबरी मस्जिद पे एक फैसला आ गया। अभी ने पिछले हफ्ते एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई है कि किस तरीके से जो गवाह ने कुछ देखा और उसको अदालत ने नहीं माना। यानी वो 500 साल पुरानी मस्जिद गिर गई और गवाहों ने गवाही दी, जो पत्रकार थे उन्होंने उसको गिरते हुए देखा, लेकिन अदालत ने उसको नहीं माना कि वो मस्जिद किसी ने साजिश करके गिराई। तो क्या वो अपने आप गिर गई? सवाल ये है कि वो जब हम माइनॉरिटीज की डिग्निटी को कंसीडर करेंगे तो हम जो न्याय देने की प्रक्रिया है उसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि ये माइनॉरिटीज के राइट्स है। और कोई उसमें ये भी नहीं कि आप स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, आपको जस्टिस करना है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन द एविडेंस बिफोर यू। और अगर आप उसमें भी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप इस संविधान ने जो माइनॉरिटीज को राइट्स दिए हैं, संविधान ने जो डिग्निटी दी है, हम उसको संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही हमने कानून पास कर दिए CA NRC। मैं ये सब चीजें इसलिए गिना रहा हूं कि जब आप डिग्निटी को इंश्योर करेंगे तो आप ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स हैं
उनको इंश्योर करेंगे। अब आप ये देखिए कि दिल्ली में दंगे हुए, हम सबने देखा, कितने लोग अभी भी जेलों में हैं, कितने लोग अभी भी जिनको जमानतें नहीं मिल रही हैं, फ्रिवलेस केसेस में हैं। तो और ये लगातार ये प्रोसेस है कि जो माइनॉरिटीज की डिग्निटी है उसके ऊपर साइकोलॉजिकल हमले करने हैं, उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें सरकार के लोग भी शामिल हैं, उसमें रूलिंग पार्टी के लोग भी शामिल हैं, उसमें बहुत हद तक, काफी हद तक जो है कई मौकों पर अपोजिशन के लोग भी शामिल होते हैं। तो ये जब आप डिग्निटी को अपने मन से नहीं मानेंगे तो आप इस तरीके की हरकतें करेंगे जिससे कि आपके देश की तमाम तरीके की माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो जेंडर की माइनॉरिटीज हैं, उन सब के साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे होते हैं। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो दिल्ली के चारों तरफ किसानों के धरने चल रहे हैं, किसान अपने कानून का विरोध कर रहे हैं। उन किसानों में बड़ी संख्या सिख किसानों की है। क्या इज्जत हम सिख किसानों की कर रहे हैं? सिख किसानों की इज्जत ये कर रहे हैं कि मीडिया रोज ये कह रहा है कि ये खालिस्तानी हैं, ये पिज्जा खा रहे हैं, इनको पैसा कनाडा से आ रहा है, ये पाकिस्तानी है, ये चाइनीज हैं। हमारे देश के लोग जिन्होंने, जो आज भी सीमाओं पे लगे हुए हैं, जिन्होंने पावरफुल लिटरेचर दिया है, उनका कल्चर में कंट्रीब्यूशन है, फॉरगेट अबाउट द availability of food they provided you, उन सब के बावजूद हम उनको रोज खालिस्तानी बता रहे हैं, रोज उनको देश का दुश्मन बता रहे हैं। यही हाल मुसलमानों के साथ है कि अगर मुसलमान अपने अधिकार की बात करेगा, अगर सिख अपने अधिकार की बात करेगा, वो कुछ नहीं कह रहा कि जी हमको कोई अलग से कुछ दे दो। जो संवैधानिक और कानूनी अधिकार हैं, उन कानूनी अधिकारों की अगर वो बात करेगा तो आप कहेंगे जी पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, इनको पैसा यहां से आ रहा है, उनको वहां से आ रहा है। ये जो डिग्निटी पे हमले होते हैं माइनॉरिटीज के, ये रुकने चाहिए। सरकार से कोई बहुत उम्मीद नहीं है। सरकार अगर बहुत से काम ना भी करे तो भी जो माइनॉरिटी के जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और वो सोशल इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते रहेंगे। जो सोशल सर्विस है, जो विभिन्न समाजों में कोहेशन का मामला है, जो रिप्रेजेंटेशन का मामला, वो उठाते रहेंगे। सरकार और सरकार के इदारे सिर्फ इतना काम करें, और उनका समर्थित जो मीडिया है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि माइनॉरिटीज को डिग्निफाइड तरीके से ट्रीट करना शुरू करें, और उनको ये देश का दुश्मन और खालिस्तानी और पाकिस्तानी इस तरीके के तमगे, इस तरीके के लेबल्स लगाना जो है वो बंद करें। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहकर अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा, वो है सेंस ऑफ जस्टिस। कितने भी आप केसेस आप देखिए, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे वो चर्चों पे हमले हुए हो, सजाएं किसको मिलती हैं? दिल्ली में दंगे हुए, जिसके घर जले वही जेलों में है। तो हमने इंस्टीट्यूशंस भले ही बना लिए, माइनॉरिटी कमीशन है और माइनॉरिटी राइट्स बॉडीज हैं, ह्यूमन राइट कमीशन है, लेकिन वो अगर अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो जो हम जिसकी बात करते हैं, जो संविधान की आस्क है, जो संविधान का ड्रीम है कि भारत के हर नागरिक को जो है डिग्निटी और जस्टिस और इक्वालिटी दी जाए, वो हम नहीं दे पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि माइनॉरिटीज जो है वो कोई और अलग से कोई राइट्स मांग रही हैं। आप ये इतनी चीजें भी अगर इंश्योर करते हैं तो वो माइनॉरिटी एक कोहेशन और एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन के हमारे बीच आएंगे।
दूसरी एक बात और मैं समाज के तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक दूसरे समाजों के प्रति अवेयरनेस नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं एक क्लास ले रहा था पत्रकारिता की, और वहां मैंने पूछा हिंदू बच्चों से, जो स्टूडेंट थे, कि भाई ईद क्यों मनाई जाती है। तो उनको नहीं मालूम था। ये हमारे परिवारों की जिम्मेदारी है, या कि ईद क्यों मनाई जाती है, होली क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, ईस्टर क्या है, गुड फ्राइडे क्या है, क्रिसमस क्या है। ये कहानियाँ, उनके पैगंबरों की कहानियाँ, सारे धर्मों के कुछ गुरुओं की कहानियाँ, ये हम एक दूसरे को, जो हम लोग का पहली रिलीजन की शिक्षा होती है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से होती है, और वो हमारे परिवारों की भी जिम्मेदारी है कि वो एक इंक्लूसिव समाज को, इंक्लूसिव समाज, बच्चे जो है समाज को दें, इंक्लूसिव नागरिक बना के समाज को दें, और एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ाएं, एक दूसरे के प्रति आना जाना बढ़ाएं। क्योंकि इस अलग अलग रहने से, घेटुइज्म से हो क्या रहा है कि बहुत नुकसान सोशल कोहेजन में हो रहा है ऑलरेडी। बहुत सी गलत फहमियाँ, व्हाट्सएप में कुछ भी आ गया और लोग उसको बिल्कुल एकदम सच मान लेते हैं। तो वो सच तभी मान लेते हैं जब उनको मालूम ही नहीं है कि हिंदू समाज की सच्चाइयाँ क्या हैं, हिंदू परिवार कैसे खाता पीता है, कैसे रहता है। हिंदू परिवार को ये नहीं मालूम है कि मुस्लिम परिवार कैसे खाता है पीता है, या हिंदू और मुसलमान दोनों को नहीं मालूम है कि क्रिश्चियन की रिवायतें क्या हैं, ईसाइयों की रिवायतें क्या हैं, उनके तीज त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, उसमें क्या है, उनको ग्रीटिंग्स क्या दें। कई बार मैंने लोगों को मुहर्रम की मुबारकबाद देते हुए भी देखा है। तो जब पता ही नहीं है, तो ये बड़ा जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम एक दूसरे समाजों की समझदारी और बढ़ाएं। जो मेरी जनरेशन के लोगों को है, लेकिन पिछले 20-25 साल में, 30 साल में जो जनरेशन बड़ी हुई है, उसमें ये समझदारी कम दिखाई देती है कि एक दूसरे के प्रति हम समझे नहीं। तो अपनी बात मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ इसी के साथ कि हम माइनॉरिटीज़ को डिग्निटी के साथ ट्रीट करें, उनके राइट्स को समझें, एक दूसरे की लाइफस्टाइल को समझें, उनकी रिवायतों को समझें, और सबसे बड़ी बात है कि हम माइनॉरिटीज़ को सेलिब्रेट करें। They have given us tremendous literature, food, culture, everything. ये वेबिनार भी देखिए, उसमें बशीर बद्री का शेर आ गया। तो हम मीर गालिब सबको पढ़ते हैं। तो बहुत रिच कल्चर माइनॉरिटीज ने इस मुल्क को दिया है, उस पर हमको गर्व होना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने सुना मुझे। Thank you, Prashant ji. I believe that he called things spade as spade in a very good way as a very seasoned journalist, and rightly said that contribution of minorities to the development of literature, civilization, that should be celebrated, and representation, and then rights, environment to be created. And then I would say that this environment of justice is very important, he said. And then awareness, creation of awareness about communities, that's very important. मैं उनकी बात से एक बात मिलाऊं और उसके लिए शिकवा मैं किसी और से नहीं करूं, उनसे करूंगा। जैसे अगर ये मुसलमानों की बात है, तो मैं एक बात बार बार दोहराता हूं, वो ये है कि जब मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जाना था, तो उन्होंने एक ट्रीटी उनके साथ साइन की, मैं तो आऊंगा लेकिन शर्त क्या है। और शर्त अगर आप सुनेंगे, एक छोटी ट्रीटी है 4 क्लासेस की। 1 कि आप जो हैं आदमियों की परस्तिश नहीं करेंगे, एक खुदा की परस्तिश करेंगे, ये मानिए एक जनरल क्लास है। दूसरा कि आप फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं करेंगे और रेप नहीं करेंगे।
और तीसरा था कि आप झूठ नहीं बोलेंगे और तोहमत नहीं लगाएंगे, बैक बाइटिंग नहीं करेंगे। और चौथा था कि आप हर अच्छे काम में मेरी मदद करेंगे। दिस वाज द ट्रीटी। और आज के जमाने में आपको फीमेल इन्फेंटिसाइड, जेंडर जस्टिस, बैक बाइटिंग, ट्रेचरी, ट्रिकरी, इसका तो एक क्लास, दो क्लास हैं, दो क्लास हैं। और ये किसी भी मौलवी को, मैंने किसी भी मस्जिद में पिछले 50 साल से मैं नमाज पढ़ रहा हूं, नहीं सुना। और जगह कहां बताए तो लोग क्या समझेंगे कि आपका फेथ क्या है। अब आपको समझाया जाता है इन्हीं कन्वेंशन से कि आप जो है इनके हकूक देख लीजिए, उनके ड्यूटीज देख लीजिए। आप ही खुद नहीं लोगों को बता रहे हैं कि हम क्या है। आप खुद तो बताओ कि क्या हुआ है, कैसे, क्या कह रहे थे मोहम्मद साहब कि उनको निकाला क्यों गए मक्के से। वो कहते थे कि बेटियों को जिंदा मत दफनाओ। वो कह रहे थे कि सारे गुलाम और जो है रईस है वो एक हैं, इसलिए तो निकाल रहे थे। ये क्यों नहीं कह रहे हो आप? तो बात ये है कि समझने की बात है। just add, Dr. Bani, that last khutbah of Prophet is all about women rights. यस, दैट्स ऑल। वही तो मैं कह रहा हूं कि मैग्ना कार्टा से 600 साल पहले जो मैग्ना कार्टा है उसकी आप बात ही नहीं कर रहे, खुद ही नहीं कह रहे हो। उसके 600 साल लगे। उसके बाद जब यूरोप तक वो आवाज आई, उन लोगों ने दस्तक दे दी यूरोप के दरवाजों पे, तब उन्होंने कैम्ब्रिज बनाया, तब उन्होंने ऑक्सफोर्ड बनाया, तब वो कुछ समझने लगे। आप तो खुद ही नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही नहीं बता रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई, और यही है जब आप अपनी स्ट्रेंथ खुद ही खो देते हैं तो और लोग आपके राइट्स का क्या देखेंगे। आपको खुद अपने आप को सही पेश करना है और उनको भी अच्छा समझना है। बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। और फिर फॉर्मली जो है मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने एक पैनलिस्ट भी रखा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मैंने कई बातें ऐसे बता दी और अब ज्यादा और एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। 2-3 बातें मैं बताऊंगा इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में। जो बातें बताई गई वो ये है कि मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो सेम वर्ल्ड ओवर नहीं हो सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक पर्पस है, वो फुलफिल होना चाहिए। तो उसमें जो मॉडिफिकेशन होनी चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेशन पूरा हो, चाहे बाय नॉमिनेशन या किसी और वजह से, उसको डिस्कस करना चाहे कि रिप्रेजेंटेशन हो, और उसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन का रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन भी है और उनकी बात ही ना सुनी जाए और बात ही ना करने दी जाए। उस किस्म का कल्चर जो डेमोक्रेटिक कल्चर है वो जो मॉडिफाई करने की जरूरत है, और अच्छा रियल डेमोक्रेटिक कल्चर बनाने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कोई ये फील ही ना करे कि मैं माइनॉरिटी में हूं। जब सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी के ह्यूमन राइट्स हैं, और सभी के ह्यूमन राइट्स का रेस्पेक्ट करना है, मेरे मन में क्यों ख्याल आए कि मैं दूसरा हूं, मैं अलग हूं। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मैं तो कभी ये नहीं सोचता हूं कि मैं कौन हूं और जो सुन रहे हैं वो कौन है। मैं तो और ज्यादा मेहनत करके उनको पढ़ाता हूं। ये कहीं आना ही नहीं चाहिए। ये आता क्यों है, उस चीज को देखना पड़ेगा, और वो फीलिंग्स खत्म होनी चाहिए। और जिस किस्म के कोई अप्रहेंशंस हैं, फोबियाज हैं, हिस्ट्री ने खुद ही लेसन दिया है कि जो जो सही बात बताई गई है वो खुद ही फ्लोरिश हो जाती है। जो राइट थिंग्स होती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं, और जो चीजें टेम्परेरीली जो है आगे बढ़ती हैं लेकिन फॉल्स होती हैं, उनकी ज्यादा लाइफ नहीं होती है, और उन चीजों का जो है वो परपेचुअल होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और तभी तो उन लोगों को एक्सेसेस करने पड़ते हैं और जो वायलेशंस करते पड़ते हैं नॉर्म्स के। एंड दैट्स व्हाई आई वुड से कि जो यूएन डिक्लेरेशंस हैं या और किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स नेशनल लेवल पे हैं, उनको समझना चाहिए, और उनके कॉन्टेक्स्ट में और अपने कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसी पॉलिसी मेकिंग, ऐसी लेजिस्लेशन और ऐसी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें बेस्ट जो फेयरनेस, जस्टिस
यूनिवर्सलिटी, इक्वालिटी जो फ्लरिश हो जाएं कॉन्सेप्ट्स, और साथ साथ जो अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वो चलता रहे। बाकी कोई ये समझे कि बस और खत्म हो जाए मैं रहूं, वो एक बहुत बड़ी गलत बात है। वही कम्युनलाइजेशन है, उसी से नुकसान हो जाता है, उसी से एक्सेसेस हो जाती हैं, और इसलिए उन चीजों को फाइट करना चाहिए और वो चीजें छोड़ देनी चाहिए। एक और बात मैं जो आज कहना चाहूंगा वो ये है कि अगर सेलिब्रेट करना है माइनॉरिटी डे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस है, तो अगर कोई माइनॉरिटी अपने आप को बड़ी माइनॉरिटी मानती है, तो वो सेलिब्रेट ऐसे क्यों नहीं करते हैं कि इस साल या अगले 5 साल में हम बेस्ट 100 कॉलेजेस इस्टेब्लिश करेंगे कंट्री में अपने एफर्ट से। एक तो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज हैं उनको अवेल करें, लेकिन हमें जब राइट दिया गया है एज ए माइनॉरिटी, हम कितना एसर्ट करते हैं अपने आप को कि हम जो है अपने रिसोर्सेज को लेके हम बहुत ही अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करेंगे इन डिफरेंट कॉर्नर्स। 100 छोड़िए, 50 ही कर लीजिए, इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिप्यूट आप डेवलप करने की कोशिश कर लीजिए। आप जो है कुर्बानी का जज्बा जो हम कहते हैं कि आप ज़कात देते हैं, आप सदका देते हैं, आप कम खाते हैं, आप कम सोते हैं, तो इन चीजों को कम से कम आप देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए। आप देखेंगे कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि अगर आप जब आप 10 ही इंस्टीट्यूशन अपना पेट काट के इस्टेब्लिश करेंगे, पूरे दुनिया में आपका रेस्पेक्ट सामने आ जाएगा कि ये इसकी असलियत क्या है, हकीकत क्या है, और उनके लिए उन सब को एक्सेस दे दीजिए जो अदरवाइज इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं। बल्कि कुछ में ये भी लगा दीजिए शर्त कि इस कॉलेज में सिर्फ वही बच्चे पढ़ेंगे जो 35% से ज्यादा स्कूल में मार्क्स नहीं ला पाते हैं, उनकी गरीबी की वजह से, उनकी पॉवर्टी की वजह से, उनकी स्टारवेशन की वजह से। आप ऐसे बनाते जाइए और पूरे वर्ल्ड में इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क इस्टेब्लिश करना की कोशिश कर लीजिए। वो बात है, सिर्फ ये कहने से कि वो किया गया, ये किया गया, हमारे यहाँ वो किया, हमें ये नहीं दिया जाता। I think you can turn the tide. You can become better contributors, as Prashant ji was saying, in many things, not only in poetry. You can establish the institutions. You can say, yes, we can bear half starvation, but we will establish the institution. We'll appoint the best of the teachers for all those schools, colleges, anything. And let us see, we are advancing, understanding. उसी से अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। जो कोर्सेज हैं, यू मेक द कोर्सेज ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड। आज तक जो इंस्टीट्यूशन बनाए तो वहां क्या पढ़ाया जाता है, क्या समझाया जाता है, माइंड क्या बिल्ड किया जाता है, वो भी तो आपको करना है। एंड दैट्स हाउ आई वुड से दिस डे कैन बी बेस्ट सेलिब्रेटेड ओनली if you get to the realities and try to advance them. Being a minority is not a weakness. Being a minority is a potential. Please appreciate that if there has been anybody most powerful, the best talented, they have belonged to the minorities. And then even today, the minority group is contributing the best in terms of thought, in terms of service, and like that. Please see around. I don't have time to speak. I have the instance to talk for another 50 hours on the instances where minority, small groups and people, they are contributing in a tremendous way. And take it as a potential, not as a deficiency, not as a weakness, but have the spirit of sacrifice, sacrificing your, if there are people in the world who don't have with them anything but one day's wages only, and they know how to spend those wages, they know how to use those wages, they know how to bring something better out of those wages. You are having a house, you are having a place to live, you are having a bed to sleep. They don't have anything but one day's wages. And they also, when they understand the things, they realize the things, they realize the way, they also do things. And I don't believe that how can a group who is of crores, lakhs, and all that, and he has a history in front, and then he is not contributing, he is not becoming a contributor. This declaration of minority rights is not a declaration that you will be criticizing. You will say, judge did not give this thing.
he did not do that thing. Okay, you must be conscious of it, but at the same time, you have to understand the situation. You have to understand the dynamics. You have to understand the realities. You have to understand the currents and countercurrents. You have to understand the history. You have to understand the present. You have to understand the future. And then you have to celebrate. If you have understood it, you celebrate your understanding. If you have taken away the hijab or the cover or whatever was covering, and you were not having the ignorance, you have fought out the ignorance, celebrate it. Today I have appreciated my capacity, my talent, however small it may be. Let it shine, let it flourish. If you have little potential, let it grow, let it come into action. Make it thought, share this thought, and then come forward. I will tell you that you will become the contributor. You will give justice to the society. You will be asking no more need of minority rights, because everybody is respecting the human rights of others. Every institution is beneficial to everyone. And that's with that thing, I would stop. I know that Prashantji has to go for another program as well. But now I shall request our worthy Secretary General IOS, Professor Zad M. Khan Saab, that please give your presidential remarks. Over to you, Professor Zad M. Khan. He's a beacon light for us. Thank you very much. He is a great political scientist. He is the No. maker of the minds. Teacher Bismillah of teachers. Thank you very much, Professor Mani. Yes, sir. Let me clarify 1-2 points. One is that Institute of Objective Studies keeps this theme very dear to itself, and we have been working on it tirelessly, and we are trying to make things better for everybody in India. I'll be restricting myself in Indian case, to the Indian case only, because the question of Muslims and minority in India is assuming larger proportions and is becoming extremely difficult. I mean, it has gone to the extent that now Muslims are fearing about losing their citizenship rights also. So if issues are taken up, then Indian citizenship is the first issue that is bothering the minds of Muslims in India. Second is the physical security is not assured. Economic deprivation is there. Denial of major rights are there. Educational backwardness is there. So if I'll go on telling you hundreds and hundreds of such things. And lastly, I will say that no other community has suffered the partition of India the way the Indian Muslims have suffered. And that too, the Muslims of North India, not of South India, my dear sir. So North India understands the pangs of partition in a big, big way. And that is the time from when the whole sort of situation is worsening day by day. Today, Muslims, the so-called minority, some people say it is the second largest majority, but anyway, they are living in a survival syndrome. They need empowerment first, and then they can be able to contribute the way the people expect them to do. They can contribute in many ways, but they need empowerment scenario to come up. Empowerment, enabling situations in all areas, in all fields. Whenever they get chance, they people show their potential. But let me tell you that a situation where lynching and physical insecurity and where economic deprivation, where citizenship denial, everything is going on, that makes the whole community highly susceptible to
many situations which are not actually healthy in terms of a good life in this country. So far as the contribution is concerned, contribution is there. It is, as Prashant Bhai has told you, I mean, for 600 years, for 500 years, it was the ruling class, and if it has not contributed anything, then I don't understand the implication of civilizational march and civilizational development in this country. The social aspect of Indian society, the social cohesion of Indian society is a dominant factor that can prove that Muslims in India, whosoever has ruled in a highly cohesive manner. They have not done anything except surviving and except doing things which are conducive, which are good for everybody in this country. So my submission is that issues are many, remedies is only one, and that is the hard work. The minority should undertake hard work and must not look towards politics. They must look towards education. They must look forward towards economy, and they should study. IOS should also take up studies of other minorities in other countries, the way they have come up. I mean, the Jews in America, how do they survive? And all other successful minorities should be studied by the Muslims, and they should see this, what are those avenues and what are those steps that should be taken by Muslims. But this survival syndrome has to go. And whole of this country must ensure and assure that Muslims get a dignified life and have got a secured life in this country, so that they are in a position to contribute to the march of civilization. Thank you very much. Thank you so much. And now we have with us Dr. Major Zahid Hussain from Chennai. Sure. Zahid Saab, I would like that you propose the vote of thanks. नहीं अभी वो अवेलेबल तो है लेकिन वो He is there. So Zahid Saab, you on your video and unmute yourself. Please propose the vote of thanks, and if you can share some idea also. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum assalam. This is after a gap of 9 months, I am able to talk, but still my breathing problem has not solved. So by Allah's grace, I decided yesterday itself when I saw this message that I should be a part of this Minority Day virtual meeting. At the outside, I thank Allah for having given me this strength to speak few words, but I will confine only to my vote of thanks as requested by our Dr. Wani Sahab. As when I speak continuously for a couple of minutes, I get this breathing problem. Then I thank all the panelists for their in-depth presentation. Start from Professor Wani Sahab, Pramod Sahab, and Tandon Sahab, Tariq Sahab, and of course, as usual, a very elusive presidential remarks by our big brother, Zahur Muhammad Khan Sahab. I really thank all the panelists for being so particular in sharing their views on minorities, and especially the journalist Tandon Sahab and Tariq Sahab and Pramod Sahab has given a very wide spectrum of the minorities, and of course
finally well touched by our Zahur Muhammad Khan sahab. I once again thank all the panelists for having organized, and especially the IOS for having organized such a wonderful program. I think we need to propagate this in our next meeting. More number of participants should take place because this is a very, very highly educated program. And I think we will certainly try to bring it to the knowledge of the other participants as well, not only in Chennai, in other parts of India as well. Inshallah, with few these words, I once again request all the participants, all the panelists, especially my IOS family, who has given me this opportunity to propose the vote of thanks. Please requesting once again all to pray for my further quick recovery. Inshallah. Inshallah. Jazakumullah khair wa khairan jaza. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं और काम कर सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें और इंसानियत के लिए आप काम करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम की दुआओं को कबूल किया है मेरे मौला। इंशाअल्लाह। आप तमाम हाँ ठीक है, हम फिर से शुक्रिया अदा करते हैं प्रोफेसर ज़ैरम खान साहब का, तारिक साहब का, डॉक्टर एमडी थॉमस का, श्री प्रशांत टंडन जी का, मेजर जाहिद साहब का और आईओएस का जो टेक्निकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये प्रोग्राम जो है पॉसिबल बनाता है। हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ ही नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम अपना अपना काम करें। इजाजत लेते हैं सबके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैरन व खैरन जज़ा।